students, the question is, which one of the following statement is correct? A. Legumes fix nitrogen only through the specialized bacteria that live in their roots. B. Legumes fix nitrogen independently of the specialized bacteria that live in their roots. C. Legumes fix nitrogen only through specialized bacteria that live in their leaves. D. Legumes are incapable of fixing nitrogen. So बच्चे हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. यहाँ हमें बात हुई है लेग्यूम्स की, लेग्यूमिनस क्रॉप्स की. लेग्यूम्स क्रॉप्स डू नॉट हैव एनी कैपेबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन. ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेबिलिटी है वो लेग्यूम प्लांट की नहीं है बच्चे. लेग्यूम्स शोज सिम्बायोसिस, symbiotic relation with rhizobium bacteria or some bacteria such as rhizobium. राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूम्स के साथ मिलके रूट्स के, लेग्यूम्स की रूट्स में क्या बनाता है? नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करता है. एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दैट नोड्यूल्स देयर इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइदर लेग्यूमिनस प्लांट नॉट rhizobium individually can fix nitrogen. Rhizobium is free living bacteria found in a soil, but it never fixes nitrogen. It only can fix nitrogen when it associated with legumes. ये leguminous plants के साथ roots में nodule बनाएगा तभी ये nitrogen fix कर सकता है. Similarly, legumes cannot fix nitrogen until unless they form nodule with a rhizobium. So legumes fix nitrogen only through the specialized bacteria that live in their roots. Yes, this is correct. Legumes fix nitrogen independently. No, they cannot fix nitrogen independently. Legumes fix nitrogen only through specialized bacteria that live in their leaves. No, the bacteria that lives in their roots and forms nodules. So wrong. Legumes are incapable of fixing nitrogen. Legumes can fix nitrogen with bacteria. So this is wrong. And the correct answer here is option A. Thank you.